अस्सलाम वालेकुम गाइस। बात हमने करनी है यहाँ पर स्पाइन की। तो स्पाइन में सबसे पहले बात कर रहे हैं वर्टेब्रल कॉलम की। द स्पाइन कंसिस्ट ऑफ कर्व्ड स्टैक ऑफ 33 वर्टेब्रा डिवाइडेड स्ट्रक्चरली इनटू 5 रीजन। हमारे पास जो स्पाइन होता है वो कर्व्ड स्टैक होता है, कर्व्ड पोजीशन में होता है और इसमें टोटल 33 वर्टेब्रा होते हैं और इसको जो है स्ट्रक्चरली 5 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। Proceeding from superior to inferior, there are 7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, and 5 fused sacral vertebra, and 4 small fused coccygeal vertebrae. There may be one extra vertebra or one less, particularly in the lumbar region. Because of the structural differences and the ribs varying amount, the movement are permitted between adjacent vertebra. क्योंकि हर पर्सन की अपनी बॉडी होती है, उसके अकॉर्डिंगली जो रिब्स वगैरह के दरमियान जो डिफरेंसेस होता है, इंटरकॉस्टल स्पेसेस होती हैं, ये डिफरेंट होती हैं। इसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती हैं। यहाँ फिगर्स में दिखाया हुआ है राइट और लेफ्ट, लेटरल और पोस्टीरियर व्यूज़ इसके दिखाए हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास रिब के फैसेट शो हो रहे हैं, रिब्स फैसेट एंड यहाँ पर बाकी सारे रीजन्स, इसके जितने भी रीजन्स थे वो शो हो रहे हैं। और यहाँ पर जो दरमियान में ये होल है, ये हमारे पास इंटरवर्टेब्रल फोरामेना है। आफ्टर डैट इस डायग्राम में जो है दिखाया हुआ है ट्रांसफर्स प्रोसेस दिखाए हुए हैं, इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स दिखाए हुए हैं और ये सारी डायग्राम दिखाई हुई है। Tissues between them are known as motion segment. The motion segment is considered the functional unit of spine. अब spine का जो functional unit होता है उसका नाम है motion segment. The two adjacent vertebra and the associated soft tissue, the functional unit of the spine. उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहा है spine may be viewed as a triangular stack of articulations with a symphysis joint between the vertebral bodies on the anterior side and two gliding diarterial facet joint on the posterior side. Then we are talking about the vertebrae. A typical vertebra consists of a body, a hollow ring known as the neural arch, and several bony processes. The vertebral bodies serve as the primary weight-bearing components of the spine. The neural arches and posterior sides of the bodies and intervertebral disc form a protective passageway for the spinal cord and associated blood vessels known as the vertebral canal. From the exterior surface of each neural arch, several bony processes protrude. The spinous and transverse processes serve as the outriggers to improve the mechanical advantage of the attached muscle. The first two cervical vertebrae are specialized in the shape and functions. The first cervical vertebra, known as atlas, provides a reciprocally shaped receptacle for the condyles of the occiput of the skull. The atlanto-occipital is extremely stable and it permitted only 14 to 15 degrees of the movement, but with virtually no motion occurring in any other plane. A large range of the axial rotation is provided at the neck joint between atlas and second cervical vertebra, the axis. Motion at the atlantoaxial average around the 70 degree of the rotation and 14 degree of extension and 24 degree of the lateral flexion. There is a progressive increase in the vertebral size from the cervical region down through the lumbar region. The lumbar vertebra in particular are larger and thicker than the vertebra in the superior region of the spine. This serves as a functional purpose because when the body is an upright position, each vertebra must support the weight of not only the arms and head but all the trunk positioned above it. The increased surface area of the lumbar vertebra reduces the amount of stress to which the vertebra would otherwise be subjected.
Although all vertebrae have the same basic shape, there is a progressive superior-inferior increase in the size of the vertebral bodies and a progression in the size and orientation